Good morning, students, and it's time for class 6 English second means English grammar. Okay, the chapter 1 and the chapter is phrases and clauses. Today we are going to learn about phrases and with clauses, not and with, because first you know the difference between phrases and clauses. Okay, first we will try to understand that is what is phrases and what is clauses. It means what's the difference between, मतलब दोनों के बीच में क्या difference है. Okay, so let's we start it. Okay, now first I'm telling you about lesson 1 chapter is a phrases. First I am giving you for some example. My best friend, and second is a jolly is my best friend. There are two sentences, but one is a complete sentence and second is not complete. We can say that both of them are group of word. First is a phrase and second is a clause. I now identify that which one is the phrase and which one is the clause. Okay, so I am telling you about which one is the phrase and which one is the clause. Okay, I am giving you a hint from these two groups of words. A group of words which has a subject and verb. A group of words which has subject and verb are called clause. जिसमें हमारा subject and verb दोनों ही यूज होता है, वो हमारा स्टार्टिंग में यूज हो उसको हम क्या कहते हैं, clause. And second which doesn't have subject and verb. So in this side there is no subject and verb. Okay, so now अब आपको idea लग गया होगा कि which one is phrase and which one is clause. Means there is no subject and verb. My best friend, this is a sense. एक sentence का पूरा sense तो बन रहा है, but it's not a complete sentence because there is no subject and verb. So the first is a phrase. Now jolly is my best friend. इसमें verb and subject and verb both are use हो रहे हैं, तो that's a what? That's a clause. So this is the difference between phrase and clause. Okay, अब आपको phrases and clauses का difference पता होगा. ठीक है. Now my second point is, now write down the question. What is phrase? Phrase क्या है? A group of word, एक group word का that makes sense, जो sense बनाता हो, but not complete sense, जो but पूरा sense ना बनाता हो, is called a phrase. You can see that my best friend, it's a sentence, they have a sense, okay, but not a complete sense. Riya is my best friend, Rahul is my best friend. अगर कुछ ऐसे sentence होते जैसे for an example Jolly is my best friend, so this is a complete sense, they create a complete sense, but इसमें कोई भी complete sense नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, phrase कहते हैं. For an example आपको ये student just write down as it is. Okay, आपको एज इट इज नोट डाउन करने हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अ ब्यूटिफुल होम, इट्स अ फ्रेज बिकॉज दे हैव अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस. नेक्स्ट, टू वॉच मूवी, हु वॉच मूवी, आई डोंट नो, बट इट्स अ मेक अ सेंस. टू वॉच मूवी देख रहे हैं ना, बट कौन देख रहा है ये नहीं आ रहा, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंस. ऑन द टेबल, तो इट्स अ सेंस, make a sense but not a complete sense, so it's a phrase. Okay, phrases. Now the second question is, how, this is your homework. How many types of phrases? Okay, students, you are in class 6, so already you read this chapter. हम आपको ये खुद रीड करना है, एंड इन शॉर्ट हम आपको पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस थिंग्स एंड एग्जाम्पल्स ऑल्सो. फॉर एन एग्जाम्पल, द sunrise, but in the east is a phrases. On my door, okay, covered with snow in a short time, that's a phrases because ये क्या है, sense है but it's not a clear sense. Okay, now there are how many types of phrases? It's generally is a 6 types of phrases. There are 6 types of phrases. First you write down the question in your notebook, and after that
mention every point, okay, every types, okay. So there are this is your second answer, okay. Okay, now next class I am telling you about the types of phrases, okay. मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी. Now पेज नंबर 6, इसमें आपका एक पोर्शन दे रखा है, अंडरलाइन द फ्रेजेस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको इसमें अंडरलाइन करना है फ्रेजेस में. फर्स्ट इज द लॉइन इज एन एनिमल ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ. यू नो दैट लॉइन इज एन एनिमल ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ. उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, तो ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ. सेम एज इट इज़ इन ग्रेट मिस्ट्री. आपको फ्रेजेस सेलेक्ट करने हैं. आई लिसन टू मी विथ ग्रेट एक्शंस. सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या आएगा आपको खुद चूज़ करना है. आई थिंक विथ नॉटी बॉय. इन दिस साइड पे आपका क्या आएगा, थिक पॉपुलेशन, ऑफ थिक पॉपुलेशन कैलकाटा की, एंड ऑफ करेज. तो इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है. जस्ट अंडरलाइन द फ्रेजेस. दिस इज योर होमवर्क, ओके. तो फर्स्ट होमवर्क इज योर टाइप्स ऑफ phrases and after that this is your second homework. So I hope you know about phrases. हम phrases के types and after that इनके clauses cover up करेंगे, okay. So have a nice day and be safe.